check kind of method which will return a message in h2 tag, I am Spring Boot. So guys, we need to know this, that how you are going to do that. If time permits, tomorrow or day after tomorrow, please give me a reminder. I'll make you learn how to Dockerize a Spring Boot project. Dockerize means you can load the project in a Docker and then you can check it and you can run it. So I write a check kind of, or make the method name is demo. So controller method you may create public or even you can avoid public. So, but I think it's accessible to the outer world. So let's say you can add public keyword, no harm in that. Nobody will say you that why you have created like that. Fine. So you can observe very clean, interestingly that the link is same, but the post and get. So I'm using the same link, but get and post are different. Okay. So this is only a different link. Is it clear, guys, till now? Yes, sir. Yes, sir. Good. Now what I'll do, I'll use a demo. So I because when I'm going to run the project, I need to, execute them. So let's go to the main. And in the main class, what I will do inside the main, implement a command liner interface. So in Spring Boot, sometimes some demo data we need to push. Okay, so I'll write add unimplemented method. This is a demo data. How I'll be using the demo data? You can use a builder design pattern. What is builder design pattern? Like this. Builder design pattern means you can create a user object just like a builder pattern. You can see the way I'm using. I'm not using any new keyword. So how I'll be using this user dot. I think the method is builder. Then dot. Now let us start the variables. ID I'm not going to use. I'm going to use what? Next one is what? Let us see what are the methods I'm going to have. Dot email name. I'm having name. There are 3. So name. Suppose the first object is Amitava and the corresponding email is, now I'm writing email. Suppose my mail ID is @gmail.com. Then again dot, then what I want to do, I need to write the last data of myself is what? Name, email ID. So there are no last data. So this is my final data. Then dot. Then after this data is over, then I put a dot. I need to put here email dot build. Yes, first object created. Exactly, guys, what I'm going to do, I'm going to create a first object and then I need to clear a reference variable to store it. I've got a user U1 ready. So next 2, 3, 4. So let's create 4 users. Okay, so suppose this is Amitava. Suppose this is a lady Anju. So Anju ma'am. Then I'm having suppose our Bhaskar sir. So let's write a B. Then suppose I'm having our Chandrasekhar sir. So Chandra sir. So I'm not writing his as a Chandrasekhar. So let us take it as Chandrasekhar C. So guys, we are having U1, then I'm coming U2, then U3, then U4. 4 objects are quickly ready. Using builder pattern, now I'm going to store all of them. How I'll be able to do that? You have that, plugin user controller. You are using that, already you are using that auto varying fact of user repository. Simply copy and bring this person here also. Then what you do, you use this one as your user repository. Then dot save. Then ये डालो आप अंदर U1 बंदे को, है ना? तो ये custom data, some trial data actually, nothing else. So guys, I'm going to load all of them slowly and steadily. Fine. Then what I'll do, I'll put a SOP only to make understanding that all saved. So when I'll boot my Spring project now, I should get this message all saved. So I'm sure that, these dummy data are there already populated. So I want to start my Spring Boot application with all these dummy data. So that's why the method run has been overridden. So it's coming from command line runner interface in Spring Boot. Okay, so you can take the mouse and you can see the source code. There is only one method, run method is present. So it's the interface.
So you are using that. Now I am asking a question to you. Just now it hit my head. Bhaskar sir, are you there? Bhaskar sir, not responding. Okay, then let me pick up one student. Shine, Yes, sir. Shine Pradhan. Fine. Yes, sir. Now, can you see this interface command line runner? Yes, sir. How many methods are there? It's only one. So void run. What is the meaning of line number 35? Functional interface. That means what? It's a functional interface. Do you remember something from lambda? Oh, yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So lambda function. So that contains only one abstract method, sir. Yeah, that means this run method is abstract method, Yes, sir. isn't it? Yes, That sir. means what? If I use this interface, I can use lambda expression. Oh, yes, sir. We can. So it can also declare like objects, methods or object class, sir. No, you are not getting me. Have you read lambda expression? Do you know lambda in Java 8? Yes, sir. Yes, sir. We do. Sorry, sir. Then, if you have a interface which a functional interface, what does it mean? It is having only one method. Yes, sir. So suppose I ask you to write a lambda expression using this. How can you do that? Chalo likho. You write it down. What I'm asking you, write a class using lambda to implement command line runner. Have that hard that technology, you need to implement that. Do it. Do it and write in that chat box. Do it now. Yes, sir. I'm trying, sir. Yeah, try it out. I'm coming from washroom. Have you done it? Pradhan? Yes, sir. Sir, writing, so I'm trying, sir. Yeah, still you are trying. Why it is taking so much time? Yes, I'm trying, sir. Like suppose I ask you to write a lambda. Suppose this is a class. Hello, all of you, please see that. Have you written? Let me see what he has written. It's Return args. Where should I write this? Return args straight away. so if you have like certain arguments to like return, so like for example, right now we have like certain users to return, so and like from your repository, what you can do is like we can do like save all of those. So at once No, you only. did not understand my question. Mhm. I asked you that this class, when I'm going there, I'm implementing command line runner. And I have overridden this method. Got it? Yes, sir. I want, instead of implementing command line runner,
I want to implement a lambda expression to do this job because command line runner is a functional interface. So if it is a functional interface, it should be eligible to perform in lambda. How we can do that? Got my question or not? So I got a question, but after things, so even I'm getting confused. No, you cannot think. You have to do it right now. Nobody will give you time in. This is the interview. This is what happens in Java. Suppose you are taking a class and I am your student. Yes, sir. Then I'll ask you this. Sir, you have taught me to teach me lambda on this. Suppose what I'm trying to tell you is this. Say, hey, you need to take challenge. Java कर रहे हो भाई, मजाक बात थोड़ी है. Is it like that everything will be pre-planned and everything will be structured? Who told you that guarantee? Suppose I'm having an interface A. This interface is having a very single method. What's the single method? Void test. It's an abstract method. That's all. How many methods are there? Pradhan, how many Only one, methods are there? Only one. So isn't it functional interface? Yes, sir. I can write what? Functional interface. Now what I want in the main, I want to implement lambda. So if I want to go to compile and try to compile this program, see, let's go to E drive in my folder. Then I compile the program in the folder. My program name was tester2. No error. So it's allowed functional interface. So functional interface means if you are having more than one method, it will not compile. See. पढ़ो ढंग से जावा कोर जावा नहीं पढ़ोगे तो स्प्रिंग में क्या तीर मारोगे कुछ नहीं कर पाओगे. So you see here, this is functional interface is a mandatory thing where only one method, either this or that. So the moment you comment it out, it is eligible for functional interface. That means it is eligible for lambda. Clear? Yes, sir. Yes, sir. Now suppose if lambda was not there, what people are used to write? Suppose if there is no lambda, so we used to write something like that. Class X implements A. Then we used to write public void test. Then we used to take a SOP and we used to write the body. I am the body without lambda. So I'm not using lambda here. This was before Java 8. Before Java 8. This was the thing. Now finish it. Even what you can do, you can make it mandatory method overriding by writing the annotation @override. Then come here, then create a exception reference variable XX equal to new A. Not X, interface name was A, class was X. So I have written the reverse. So interface name was A, then small a, new X. Then using that small a, I am calling the method test. So people used to do this before lambda. Now let me compile and check whether I have done correct or wrong. So I have done correct till now. C. Clear, Pradhan? Yes, sir. Yes, sir. Now I am asking you, you are in the age of after lambda. अब तुम जावा 18 कर रहे हो 17 कर रहे हो क्या फायदा करने का अगर तुम यूज ही ना करो तो. So now I want to avoid this class entirely. तो कैसे lambda लिखे? What is the name of the interface? A. Fine. So लिखो A. Can you declare a variable y? Then लिखो equal to. Then give a symbol of lambda. Then this. Then what? The body, what you have Body, written? sir. Body. हो गया. Yes, sir. The argument, then the body, sir. Yes, sir. Argument is not there, na, so I'll write a blank. Yes, sir.
Yes, sir, it I'll can write be. what? Now after lambda. After lambda from Java 8, isn't it? Yes, sir. So then how do I call the method now? Then I can call the method y dot. What's the method name? Test. Test. Simple. So these people are doing nowadays. So you cannot compile the program if you are using minus source 7 because it is started, lambda and all started from Java 8. It will not give you. Lambda expression are not supported in source 7. Use source 8 or higher to enable lambda expression. So obviously now we can use the moment you can use 8, 9, 10, anything it will allow. Or if you don't write anything, it is by default 17 in my machine. That is the same thing. I want to apply the same concept. What I did here. I did this code, so I copy this code to all of you. What's the point of writing if you don't apply? Now come to your Spring Boot. I want in the Spring Boot you apply the same fact here. This is exactly like A. This is exactly like test. This is only having same. So why can't we apply the same here also? But how? तो हम क्या करेंगे? तो सबसे पहली बात, let us comment the implements. I'll not use it. The moment I comment this one, I do not even need to write the entire body of this method. Comment it. Don't comment it. Before commenting, simply copy कर लो इसको, किंतु बाद में uncomment करना मुश्किल होगा. So what I do? I take this is the amount I need. Na? So what I'll do now, I'll comment it. So no problem. See, there is no error in the project because I have taken the things out. Now I am coming into main. Now I'm going to use a lambda. What's the name of your interface? Command line runner. Simply copy the name. Come back. Take C. Reference. Semicolon. Make Eclipse implement. Import it. Error चला गया. अब लिखो equal to. Then bracket. Why single bracket? Because इसके bracket में भी इसमें देखो एक array है, तो आपको भी यहाँ पे एक array देना पड़ेगा, नहीं तो वो satisfy नहीं होगा, है ना? तो what I should give? I should write here string x this. String 1 this. So I need to declare a variable this. अब क्या करेंगे हम लोग? Parameter, then the lambda, then start the bracket, then close the bracket, then give a semicolon. See, no syntactical error. Now what I will do? I'll go there. This was my actual requirement. So what I do? Copy them, then push it in between. ये डाला. Then what I will do? I will import user. Then what I'll do? I'll import user repository. Why user repository is not coming and visible here? That must be some problem. Oh, static. Yes, because it is using from main. So you have to write a static. No problem. Declare it as a static. Then what I'll do? I write a SOP. All saved. Simple. See guys, can you see how we are going to do this? So this is what the body of the method is written. Now I should not write it here actually. Then after this line, now I need to call it. So now I'm going to call it C dot, what's the method name? Run. And what is the array I should pass? I should pass the array passed in the main. That's all. So I think there is a problem now.
add throws. Yeah, unhandled exception. Okay. So what I will do, I can write a try catch block to call it. Yes. Then here also I should write some SOP to print the if there is any exception. And here I should apply that. So this is the body of the method using lambda. And then I'm calling the method using c.run. I'm supplying the same argument of main here. I'm using the lambda syntax. Why I'm supplying a array here? Because the original method is also having that one. I have to satisfy. As because there was a throws clause, I cannot cancel that. So I have handled the throws clause using try catch. In the catch, I have written the thing and I have printed the possible error. Am I clear, guys, how I have applied the concept here in lambda expression? Yes, sir. All of you, please tell me, is it okay? Understood? Yes, sir. Okay. Yes, So sir. you need to apply the thing. सीखने से क्या होगा? Unless and until जब भी तुम जैसे ही मैंने मेरा नजर लगा यहाँ पे, the moment I saw this functional interface, at that moment it hit my brain. Why I can't apply a lambda? I should be applying that. Suppose you create a thread in Java. Suppose you just want to create a single thread in Java. And you see the thread runnable interface is having simply what? If you want to create a thread in Java, how do you create a thread in Java? Normally people write that conventional way, but you can write in a single line like this, because again it's a lambda expression. Runnable R equal to, then no bracket, then this, then again lambda symbol. Then what if you want to write a single line? Suppose I write here SOP, then I write the thread is, then I write thread.current thread.get name. So this is how you create a thread using lambda. And in the next line, you simply call r.start. Sorry, you need to create a thread object. Thread T1 equal to, then what I'll do, new thread. Okay. So thread T equal to new thread. Then what I should do, I should give a name of the thread. Suppose my thread name is Amitava, then it is connected with which object? R. Simple. Then in the next line, what I'll write? Sorry, I think remove argument to mass thread, or I think I should give the name will come in the next parameter. It was reverse actually. So fine. So this is the thread. Then how do I start the thread? R.start. So this is the, sorry, not R, T1.start. So this is the new way of writing thread nowadays. Nobody writes the old mechanism. This is how you should create a thread using lambda. So stop writing implements interface. Whenever you see the interface is having only a single method, simply go by lambda. Forget others. Okay. So now guys, we should be able to run our project and let's see whether Spring Boot application is running or not. Edu is null. User repository is null. Tell me why this error is coming. It is getting me null. That means what? It is not injected some way. So let us see the user repository auto. In main class, I think auto word I've forgotten to write. No, I've written auto word, but I've written static. That's why it's not working. But if I make this one this, then the problem is what? I cannot use this one. All will be now red. Then what I should do? So what I do here. User repository, let me write a parameterized constructor here. Let write generate getter and not getter and setter. Because I want to continue with lambda. So overwrite implement generate constructor using field. Okay. So this is what I've done. Now
cannot make a static reference to non-static field. Yes, obvious. I have to now make it static. So will it work? Cannot prepare statement, invalid data access. SQL org SQL could not prepare a statement. Why? Email name ID. Insert into email name ID, expected identifier. So email name ID. So what was there in my user layer? It was what? ID name email. Okay, so let me stop this guy right now. We'll generate later. Now come back here. So I should pass first what? First ID. Suppose 10, then dot. Then name, ID name email. Then also, just wait. Dot. Then dot ID something dot. Then dot ID something dot. Save it. Okay, so still there is error. What's the error? Anybody can tell me? The two IDs are same, sir. So I think that's why we have to. That may be yes, primary key. Fine. Yes, you are correct. Oh, it's giving some other problem. Syntax error. SQL grammar could not prepare statement. Error performing load command. Select is all working, but select user ID as the SQL is generated. Nested exception SQL could not prepare. I think it's having certain problem. Okay, so what I should do now, let us go back to the old approach first. Let us see whether we are facing the problem due to writing lambda oriented way or not, whether lambda is working fine, but we should be also, we need to first run our application. So what I'll do, instead of run, it is actually, I think, running this run first, then it is running. Na? So what I've done actually, we have written the body inside the main, and I've written like that. So what I should do, let me first of all cut this. Got it? And what I do now, I bring the entire portion below this. Then what I should do, I should now put the entire thing comment here. Then what I should do, I should make this guy open now. Then what I should do, I should be going to here, it is telling remove @override, because it is implementing command line runner is again required here. So let us add this, because I'm going back or rolling back to the older one. Now, as because AutoAdd is already there is no point of writing this. So comment this. Now let me save. So now let us come here, fail to execute command line runner. Null pointer exception, because this guy is again static, so let us remove it. Now there should not be any problem. Yes. I think let us now stop it and let us clear the screen and let us now again rerun the application straight away. But we should be thinking about that lambda part. Still we are having that error, insert into, why it is taking email name ID? This is the problem we are facing. Insert into email, then name, then ID. Why it is coming like this? Because in our case, what we have done, we have run Amitava name. Okay, ID is now working, not working because I have made that one
off. So let us switch it on. See now. Close the screen. And then let us rerun the project. अच्छा, एक चीज ये हो सकता है, यस, यूजर नाम से टेबल में प्रॉब्लम हो सकता है, बिकॉज डिफॉल्ट यूजर इज ए प्रोटेक्टेड वर्ड. So guys, we should make it a table annotation and then name equal to, suppose the table name I put ABCD. यूजर बड़ा खतरनाक नाम होता है. Save it. Let's clear the console and try to again run it. अच्छा, एक चीज और देख लेता हूं, इसमें क्या लिखा है, क्रिएट है. ये क्या क्रिएट है, मतलब टेबल बार बार बना लेगा. So it's fine. ओह बाप रे बाप, कितना झमेला. यस, डन. तो ये सारा जड़ उसी में था. So guys, please remember, do not, if the class name is user, wait, বলো দাদা. দূর এসএমই ভিডিও আমি পড়াচ্ছি তো ক্লাসে এখন. কোন এসএমই কোনটা পাঠাবো? হ্যাঁ, ওইটার মানে আপডেটেডটা. যা চলে, হ্যাঁ পাঠাবো. এটা শেষ করে নিয়ে পাঠাচ্ছি, পাঠিয়ে দিচ্ছি, এদিক ওদিক করে পাঠিয়ে দিচ্ছি, অসুবিধা নেই. ওকে, শিওর. হ্যাঁ হ্যাঁ, এখানে এসব ভেবে দেখছো না, আমি তো কুলকাল পড়াচ্ছি. দূর, ও ক্যারি করো না, বারবার বলছি, ক্যারি করলে তুমি ফেসালে পড়ে যাবে, মানে তোমার মানে ইন্টারনালি কোনো ভাবারই দরকার নেই কোনো. ও হয়ে যাবে, গল্প শেষ. ও তো আবার এটা পাঠাবে, আবার এটা ছুঁড়ে ফেলে দেবে. কোনো চাপই নেই. তো ভালো তো, এগুলো হওয়া মানে তো কনসেন্ট্রেশন দিচ্ছে, তোমার সাথে কথা বলতে গালাগাল দিচ্ছে. যত গালাগাল খাবো তত বেটার. হ্যাঁ, যত ভালো বললেই বিপদ. ভালো বললে জানবে পেছনে আর না না, রিড করার চেষ্টাও করো না. এটি তো ভুল করছি. রিড করবে কেন? ওকে রিড করে তুমি বই লিখবে নাকি? ওকে রিড করে তোমার কি হবে? তুমি তোমার কাজ করে যাও, রিড করার চেষ্টাও করো না. অসম্ভব একদম. ওটা পুরো মনে রাখো, রাইট অনলি, মানে রাইট ডিসেবল আছে. আসবে, কিছু বলবে, ইমপ্লিমেন্ট করবে, আবার চলে যাবে, আবার ইমপ্লিমেন্ট করবে, আবার আসবে, আগেরটা মুছে দেবে সাথে সাথে. মানে কোনো ক্যাশে মেমোরি রাখবে না, তাৎক্ষণিক আর কি. মানে ভোলাটাইল মেমোরি হয় না একটা ব্যাপার, ওই রকম. হ্যাঁ, তখন আবার ওইটার জন্য আমার ভোলাটাইল অ্যাপ্লাই করবে, তখন আর এটা থাকবে না. যখন যেটা তখন সেটা. যখন ওগুলো নিয়ে বলবে তখন এগুলো নিয়ে ভাবার দরকার নেই. এগুলো তুমি ব্রেনে নিয়ে কিন্তু ওখানে যেও না, তাহলে শেষ. যখন ওখানে যাবে, এখন প্লেসমেন্ট নিয়ে ভাবতে বলে যে শুধু প্লেসমেন্ট, কোনো কিছু ভাববে না. আবার দুদিন বাদে দেখবে ওই আবার আরেকটা টপিক নিয়ে এসে প্লেসমেন্টকে চেপে দেবে, তখন আমার প্লেসমেন্ট ভোগে. কোনো কিছু সবকিছু একসাথে নিয়ে চলতে যাও না. মানে খানিকটা ব্যাপারটা কি হচ্ছে, যে আমি যদি ওরকম ভাবতে যাই যে আমি বাবাকে নিয়ে ভাববো, আমি ঠাকুরদাকে নিয়ে ভাববো, তার বাবাকে নিয়ে ভাববো, আমি আমার হতে পারতো কোনো কেউ একজন, তাকে নিয়ে ভাববো, লাভ নেই কোনো. তুমি এখন কাকে নিয়ে ভাববে? তোমার ছেলে, তোমার বউ, ব্যাস. হ্যাঁ, ওই আর কি, মানে যারা তোমার এক্সিস্টিং. আমার মা কিছুদিন আছে, আর কিছু মানে মা ফুটে যাবে, মাকে নিয়ে ভাবা বন্ধ করে দেবো. বাবা যদি আমার বাবা যেমন ছিল, সেজ মামা ছিল আমার বাড়িতে বিরাট পপুলার, মানে ভীষণ পপুলার. কেশবচন্দ্র নাম ছিল. কেশব মামু একদিন সকালবেলা চিতামিচি করতে গিয়ে হার্ট অ্যাটাক করে মরে গেল. তো বাবাকে গিয়ে বললাম, বাবা বিকেলে মুড়ি দে, বাবা মুড়ি খেতে খেতে বললো কেশবটা মরে গেল. তারপর দিন থেকে বাবা নর্মাল বললো মরে গেল, তো কি করবো? কার কোনোদিনও নামও তোলেনি তার, এবং তাকে কোনো শোক পালনও করতে দেখিনি. গেল চ্যাপ্টার ক্লোজ. তো ভেবে কি হবে? ফিরে আসবে এই বিপদটা, তোমাকে আমাকে এত কিছু বলবো, ওই নিয়ে ভাবতে বসলে তো আমি এখন ক্লাসে পড়াবো কি করে, তাই না? তোমাকে এখন আমাকে অ্যাঙ্গুলার পড়া, এখন স্প্রিং বুটে ভয়ঙ্কর কোড নিয়ে বসে, আমি নিয়ে ভাবছি উনি ভেবে কি, ওটা মুছে দিচ্ছি পেন থেকে. সবসময় ডাস্টার রাখো হাতের কাছে. চলো ভাই, টাটা. Okay, so let's start. So public class user, so now we have successfully created that.
What you guys need to do, you need to change it to the previous structure, and also you need to run the same program, okay, into using lambda structure. What I've written, I'll send you the code here. This body you need to implement and see how you can do that. Now, as because it is running, so obviously I should be getting the data. रुको यार मेल चेक कर लेते हैं. Attendance sharing, invitation, please ensure we'll meet together. কি together meet করবে রে ভাই, কিসের জন্য? Attend a training on attendance sharing process coming Tuesday. বুঝি করেছে. আচ্ছা, now let's come here. আচ্ছা, হোয়াটসঅ্যাপটা দেখে নিয়ে একবার দাঁড়া. আমার তো মানে না এতদিকে ঝামেলা, কোন দিকে যাব আর কোন দিকে থাকবো, পড়াবো কখন? দূর, এ হোয়াটসঅ্যাপও খুলতে চায় না বাবা. Is there any aptitude test for the latest opportunity, some key opportunity placement tracker, confirmation preparation? Aptitude test, দেখেছো তো? এই তোরা aptitude পড়া শুরু কর. Start reading aptitude. All companies are coming now. So now let us come here and now go for Angular part. Yes, we are developing Angular. So now guys, I need to create the Angular application. But before that, I also need to check out whether it is connected or not. So what I'll write here, localhost this then slash. Achha, what is the URL I've given? I forgot. Let me go to the controller you can see now /users. Fine. So gate mapping will straight away work with browser. So I run it. Yes. So guys, is this okay till now? Bolo jaldi bolo फटाफट. क्या भाई मर गए क्या, जिंदा हो क्या, बताओ कुछ. हाँ ना, कुछ बताओ. Okay. Yes. Akash Singh, is it clear? Getting things clear? Yes, sir. आकाश, इसमें लैम्डा लिख के दे पाओगे? आकाश, क्या हो भाई, लैम्डा जैसे ही बोला चुप हो गए. मैंने लिखा है, कहाँ लिखा है? अरे जो मैंने कमांड लाइन रनर के लिए बोला था, जो अभी स्प्रिंग बूट में. মোনালিসা ঢুকে কি করছিস তুই? আছিস নাকি এবার? আরে আমি তো শুরু করেছিলাম মিটিংটা, আপনি তো ছিলেন না। ও, তুই বসে আছিস এখানে চুপটি করে? আরে আমি বসে নেই, আমি অ্যাঙ্গুলারে কেস খেয়ে বসে আছি। ও, বসে থাক, কেস খেয়ে, ভালো হয়েছে. আমি একটা মজার কাজ করছিলাম, জানিস তো? হ্যাঁ, কি হয়েছে? এই দেখ কি করে আজকে করাতে করাতে ভূত চাপলো মাথায়. সকাল থেকে তো মিটিং ওটা দেখছি, আমার তো অ্যাঙ্গুলার নিয়ে মাথা খারাপ হয়ে কেমন মজার. এই কোডটা দেখতো, এটা কিন্তু আমরা কেউ ট্রাই করিনি. উই হ্যাভ নেভার ট্রাইড. ইমপ্লিমেন্টস কন্ট্রোলার না লিখে গোটা কোডটাই দেখ ল্যাম্বডা লিখে দিয়েছি. মজা না? কিন্তু এটা করে একটু ঝাড় দিচ্ছিল, একটু করে দেখিস তো হয় কি. ঠিক আছে, হ্যাঁ, এটা বেশ হঠাৎ করে মাথায় এলো, কারণ কমান্ড লাইন রানার হচ্ছে ফাংশনাল ইন্টারফেস. তাহলে ফাংশনাল যদি এই দেখ এখানে ফাংশনাল ইন্টারফেস, সো আমরা ল্যাম্বডা ইউজ করতে পারবো. হ্যাঁ, সো দ্যাট ইজ আই ওয়াজ ট্রাইং. হঠাৎ করে দিমাগে এলো, নিচে তো কোনো এ নেই. সো গাইস, লেটস স্টার্ট নাও. হাউ টু ডু নাও? সো আই প্রিপেয়ার্ড এ মেটেরিয়াল ফর অল অফ ইউ দ্যাট আই টোল্ড ইউ. So you can use that one, but it is not having everything. So you can simply use this. So let's start. So you can write here ng new, then front end. So let the Spring Boot project run in the behind, and we'll start with ng new front end. So we'll start creating a simple Angular application to write the service layer, and then update part and all you can do it later from internet and all. Also, ma'am and sirs will make you understand. So you can basic part I can do. Once one URL is connected, you can connect to any other URL. So how to start? So guys, we have seen that this part is over. Now the Angular CLI is coming. This is the installation not required. We have done that one. ng new Angular client we have created. Fine. So let's the Angular entry point. Fine. So the first entry point is what we need to, because you know in Angular, we are going to have the entry point of Angular is your index.html file. So what they are doing, that bootstrap has been added there. Okay. So app root is going to appear in the app root component.ts. So I think, let me see. Let me continue this.
So unless and until it is done, we cannot start. So this is our entry point of Angular application is plain old index.html file. So guys, we'll use this file and we'll add up this part where you can see that we have added the bootstrap, support and the body in approot /html. So bootstrap 4 has been added. Okay. So we have done that one. Then simply we can now go to the project, cd, then front end, then code dot. So opening the Visual Studio Editor, open the src, simply go to your app, open app and go to your index.html. So you can see the index.html is simply present. So what I will do, let us go to here and let us copy this. So what I'm going to do, I'm going to here, you can see app root. App root is basically something from where the root element of your Angular, that is your app component. This app is basically loaded. So I'll load this guy here. So this is how you are going to install your Spring Boot Angular. Title will come like that, and some design and all will be done. Okay, so Bootstrap 4 is added and app root is there. This is the tag inside the body. So this is basically app root where Angular is using the component. Now let us come to app component.ts. So it is now in the app directory. So in the app directory, so you can close this. So you are not requiring this one. So close this one. You should see the numbers 1, 2 coming up here. Now you are going to app component.ts. So let's go there, app component.ts. So we can see this guy is present. So simply copy करो, उठाओ और डालो फटाफट. तो भाई क्या है, इसको डिलीट करो, इसको डालो. So you can see now constructor is coming. For learning purpose, you can write, I already told you in last class, console.log you can use. Okay. So in the console.log, you can write some message. I am the constructor, so that you can understand that, this is the body execution point of constructor. This is the title I've created, colon string or any also you can write, up to you. So this is your app component.ts file. I've loaded that one. So we are not going to deep dive and all. Selector is already you these things already, all of you know that. So the now coming the display part of app component.html part. So guys, now we are going to put this one in the HTML. Copy. Angular में इतने सारा कोड नेट में अवेलेबल है, तो कॉपी पेस्ट से ही पूरा खत्म हो जाता है. फालतू में कौन करेगा यार, बताओ. तो कंट्रोल ए डिलीट, कंट्रोल वी, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी में आपको पीएचडी रहना चाहिए. ठीक है. सो दैट इज द मेन एरिया ऑफ सक्सेस. So div area, you can see now I've created lin, list index and all. So everything have been done. Now title expression, variable, these things, syntax already router link. I've taught you router link. What is that in your Angular routing last day? So there is a list user and there is a add user. These are the two main links I'm going to create. List user means it show all the user. Add user आपको दिखाएगा, मतलब नया यूजर के लिए. तो भाई आपको अभी क्या करना है ना, आपको एक मॉडल फोल्डर बनानी पड़ेगी और उस फोल्डर के अंदर आपको ये बनाना पड़ेगा. तो आ जाओ भाई यहाँ पे, तो क्रिएट ए फोल्डर मॉडल, क्योंकि फोल्डर मींस इट इज आल्सो लेयर्ड आर्किटेक्चर. सो नाउ ng जनरेट क्लास यूजर. अजीब केस देखो, यहाँ पे दिखते हैं क्लास यूजर यू छोटा देते हैं लेकिन बनता है बड़ा. ठीक है. तो ये सब एंगुलर का भाई पॉलिसी है, मेरा नहीं है, मेरे को ब्लेम मत दो. तो ये देखो मैंने गलती कर दिया. क्या गलती कर दिया, मैंने उस फोल्डर के अंदर गया नहीं, बिना फोल्डर के अंदर जाए मैंने मार दिया ये कोड. तो गाइस व्हाट इट विल डू, इवन इट विल क्रिएट द फोल्डर मॉडल बट इट विल नॉट क्रिएट दैट. सो आई विल डू ए कंट्रोल सी, कम आउट ऑफ हियर, आई एम नॉट इंटरेस्टेड. क्रॉस चेक करके देख लेते, बन गया नहीं, पता चला बन गया है. ठीक है. तो देखो ये लगता है बना नहीं है, एपीपी के अंदर कुछ तो आया नहीं है अभी तक. ओके फाइन, बच गए हैं. So guys, what I should do, I should go to inside the model and then अब कलर वलर कैसे चेंज हो जाता है पता नहीं क्या होता है. और फिर आ जाओ, फिर यहाँ पे लगाओ उस कमांड को, क्लास यूजर. मॉडल के अंदर घुस के बनाना पड़ता है. तो अब ये पूछ रहा है कि भाई गूगल से आप डायलॉग बाजी करोगे, मैं नहीं करूंगा यार, भगाओ उसको. तो नो. तो भाई देखो मॉडल फोल्डर के अंदर आपका बना.
एक spec file और एक TS file. Spec file is only for testing required, otherwise it's not required. So you can go now to here and you can cross check. ग्रीन कलर में आएगा ना, अपना जो बनाएंगे हम लोग वो ग्रीन कलर में आएगी. तो भाई एपीपी के अंदर आपका बनना चाहिए ये फोल्डर. अब बना कहाँ है? ऊपर बनाएगा. हाँ ये देखो ग्रीन, ये बंदा बन गया यहाँ पे, ये देखो. और ये स्पेक हमको नहीं चाहिए तो इसको क्लोज कर दो, डिलीट भी कर सकते हो, फर्क नहीं पड़ता. नाउ गाइस कम बैक हियर. तो ये हो गया बॉडी. एक्सपोर्ट मीन्स आई एम गोइंग टू मेक द बॉडी ऑफ द कोड टू आउटर, एक्सपोज टू द आउटर वर्ल्ड. ID colon string and all. So why it is giving this error? You can take the mouse and go to the quick fix and add undefined. So अगर आपको लग रहा है कि भाई आपका दिमाग खराब हो रहा है ये एरर से, तो आप इसको हटा सकते हो. इसको रहने से भी कोई इशू नहीं है. Undefined मतलब you are not dealing any value. Now comes the most important. Please don't forget this line. You have to create a service folder. क्योंकि मैं लेयर्ड आर्किटेक्चर करना चाहता हूं. सो आई नीड टू क्रिएट ए सर्विस डायरेक्टरी एंड विद इन डायरेक्टरी इशू दिस कमांड. तो हम लोग क्या करेंगे भाई, यहां पे आ जाएंगे, मॉडल से बाहर आएंगे, फिर हम बनाएंगे फिर एमडी सर्विस. ये बना डाला. अब उसके अंदर डालेंगे, फिर से सीडी एमडी के अंदर चलता जाएगा हम लोगों का. और इसमें आके हम लोग क्या करेंगे, विल कॉपी द कमांड और पेस्ट करेंगे फटाक से. जनरेट सर्विस तो कहां पे मारेंगे, सीएमडी में. सीएमडी में काम करते रहो. डू नॉट यूज टर्मिनल ऑफ दिस आईडी, इट इज वेरी बैड. उसमें एरर हो जाता है. तो देखो भाई सर्विस फोल्डर के अंदर आपका बन गया स्पेक फाइल और टीएस फाइल, दोनों बन गए हैं. चलो यहाँ पे आके कंफर्म करते हैं. ये देखो आपका बन गया, ये आ गया सर्विस फाइल. इज इट क्लियर गाइस? स्टिल यहां तक सब हो या फिर भाग गए हो क्लास प्लस छोड़ के, पता नहीं. लेट मी क्रॉस चेक. Yes, sir. Yeah, yes, sir. चलो कुछ बंदे हैं. तो फाइन गाइस, कंटिन्यू. नाउ वी आर गोइंग टू राइट ए सर्विस. वी हैव सर्विस हम लोगों ने बना दिया है. तो देखो भाई ओपन डॉट सर्विस क्लास एंड यू प्लीज पुश दिस पर्टिकुलर लॉजिक. ऑलरेडी वी हैव डिड दिस वन इन द लास्ट क्लास. save method find all, because we are doing only 2 operations in this particular Angular. So let us cross check what I have done here. So you can see now injectable was already there. HTTP client, HTTP header we are using. User हमने import कर लिए हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए cannot find RSJX observable. So now this is the error which I am facing. So guys, we need to know now that it is telling me the error cannot find. अब क्या करोगे, इसको कॉपी करो, कंट्रोल सी लगाओ, गूगल में जाओ, इसको पेस्ट करो यहाँ पे और मारो एंटर. और देखो ये बंदा यहाँ पे आपको फिक्सिंग देगा, बिकॉज इट इज ये ना अपडेट हो जाता है काफी. तो क्या हो जाता है, दिस विल सॉल्व द इशू. npm install save rsjx compact. तो देखो क्या बोल रहा है, और करेक्ट फ्रॉम इंपोर्ट इंस्टेड ऑफ rxjx. अच्छा इसमें बोल रहा है ये काम करना चाहिए. देखते हैं फिर पहले. What should I do now? Delete this line observable from rxjx. Now let me save it. Yes, it's taken. Now you can see guys, we have solved the problem. Instead of this, now this has been updated. Okay, so guys, you see here, this is the way you can, it is now taken to rxjs. So I think we should install this one also, rxjs-compat, and then it should work better. So guys, what I'll do, I'll write this one here, not this. I need to copy it again. Control C, come here, paste, enter. rxjs-compat. Yeah. Then come back here. Let us see. There is no error till now. Fine. So I need to change the port number because this is the service layer, because I'm using this users. So guys, this is because I'm using only one link now. One method is get and one method is post, but my link is same, all are users. So guys, I'm going to use this. So there are no error here. So you can see in the constructor, I'm adding this one, and find all method observable are working. Observable is returning all the username, and save method is saving a new user. Okay, so till now we have done this, then come back. They have given the explanation, forget that. Now we need to user service component, because user service class is the middle layer we have written. Now what I need to do, I need to create a simple new component.
So guys, I need to create a new component, but remember you need to create a new folder user-list. And then you need to create a component to display all the things. So come out of here. And then you need to write here, what you need to write? MD, then this. Then go CD user list. Then sitting from this folder, guys, we need to now run this command. This is the component that we are now going to create, which will display all the. So I'm running the command inside the user list folder. Please take care, because all are separated as per layered architecture. So you can see now it is giving a error. So what I will do, okay, this is the wrong thing. I just forgot to tell you, when you are creating component, it will create the folder by the component name itself. You do not need to create. So I have done a wrong thing here. So what I'll do, I'll delete the folder user list. So I need to come out of the folder rd money user directory and deleted that. Then I will supply the folder command directly here. It will create a component inside that folder. You can see, guys, the folder is also created. So this is, you must remember, when you are creating component, do not create the folder, but instead of, in case of class, in case of service, you must create the folder manually. So these things you must remember. So this is, they have given a wrong thing here, that folder has to create. It will automatically the folder will create. So now we are going to go to that particular component, and in that particular component, we need to write this particular code. So guys, we are already having that. So let's copy that and go to your new component folder. That is, this is model is okay. Let's close all. Close all. So make it very clean. Then service को close करो. Then user list. This बंदा आपने बनाया अभी, तो come to this one. Control A, delete, Control V, paste. Guys, now I need to quickly check it out. तो भाई आपका देखो यूजर जो है, यूजर आपका कहाँ से मिल रहा है? तो यूजर उसको नहीं मिल रहा है ना, ऑब्वियसली नहीं मिलना ही चाहिए. तो हम क्या करेंगे? डॉट स्लैश, यू सी हियर इट इज यूजर. यूजर आपको कहाँ से मिलना चाहिए? यूजर आपको यहां से नहीं मिलेगा. यूजर आपको मिलेगा डॉट, आई थिंक आपको मिलेगा यूजर. यूजर आप कहाँ ऑलरेडी यूज कर चुके हो? कहाँ यूज कर चुके हो? ऐप मॉड्यूल में. अच्छा, यूजर लिस्ट कंपोनेंट भी आपको यहाँ पे एरर दिखा रहा है, क्योंकि आपने यहाँ पे इसका एरर है. तो भाई पहले तो सर्विस को इंप्लीमेंट करो. ये सारे इंपोर्ट जो है ना गलत है. तो ऐसा करो, इसको काटो from. Then I need to write here कहां से ये बंदा मिल रहा है आपको. देखो आप कहां बैठे हो, आप यूजर में बैठे हो. आपका कहां मॉडल कहां से आ रहा है? यूजर से, मॉडल से आ रहा है. मॉडल कहां पे? पैरेलल है. पैरेलल आपका सर्विस फोल्डर SRC APP. तो APP आपका, इस APP के ऊपर आपका SRC है ना. तो आप क्या करोगे? डॉट डॉट लगाओगे, फिर मारो डॉट. तो जैसे ही आप मारो डॉट, तो आपको मिल जाना चाहिए अभी मॉडल. APP नहीं, ये आपका नहीं मिल रहा है. तो डॉट नहीं, ये भी गलत है. तो कैसे हम इसको इंपोर्ट करें? इसका इंपोर्ट में प्रॉब्लम हो रहा है. ये देखो, ये मॉडल आपका, ये बंदा को लेना पड़ेगा आपको. यूजर डॉट TS ये मेरे को चाहिए. तो हायरार्की वाइज हम कहा जाएंगे? इंपोर्ट यूजर फ्रॉम, देन मॉडल्स. आ गया बंदा, मॉडल स्लैश यूजर. यस भाई, थोड़ा सा तो ब्रेन लगाना पड़ेगा. एवरीथिंग विल नॉट बी रेडी एंड रेडीमेडली अवेलेबल. तो अब आ जाओ फिर इसमें. अब बंदा, ये सर्विस कहाँ है भाई? सर्विस भी आपका मॉडल का पैरेलल लेयर में है ना. तो सीधा लिखो सर्विस. ये देखो आ गया सर्विस. अरे यार, ये कहां से आ गया? तो सर्विस आया, फिर मारो स्लैश और ये मारो, ये आ गया बंदा. देखो भाई, अब यहाँ पे आ जाओ. ये बंदा क्या बोल रहा है ना, क्विक फिक्स कर दो इसको, ये रो रहा है. तो यूजर वी नीड टू बी अप्लाइंग अनडिफाइंड. बस. इट क्लियर गाइस? सॉल्विंग द एरर्स. Yes, sir.
तो गाइस यू नीड टू बी वेरी क्लियर इन व्हाट लेयर यू आर क्रिएटिंग द फोल्डर। आपको ये खुद टेक केयर करना पड़ेगा। मटेरियल्स वगैरह में रहता है लेकिन बहुत गलत भी रहता है, तो भाई यू नीड टू टेक केयर अबाउट दैट। इट यू कैनॉट, इट आई कैनॉट टीच यू दैट। नाउ वी नीड टू कम टू द यूजर लिस्ट कंपोनेंट, है ना, मतलब जो डिस्प्ले करेगा बंदा, तो डिस्प्ले वाला ये आ गया। तो भाई आ जाओ डिस्प्ले करवाते हैं। डिस्प्ले कैसे करवाएंगे ना, डिस्प्ले वाला HTML में जाएंगे ना, तो ये हो गया आपका HTML। ये बंदा को उड़ा दो, ये बंदा को डाल दो। तो भाई लेट यूजर ऑफ यूजर्स सारे आ गए। अच्छा, एक कहीं पे ये गलती था जो अभी सुधर गया है। यस, तो गाइस आपको लग रहा होगा आपने सब कर लिया, लेकिन एक जगह में ना अभी रोने का काम बाकी है। पता है क्या आपको क्या करना है? नाउ ये तो क्रिएटिंग ए कंपोनेंट, इसका काम हम बाद में करेंगे। उससे पहले ये नया नया चीज डालने के लिए एक लास्ट, एक फाइनल काम रह गया है, ऐप राउटिंग मॉड्यूल। यस, अच्छा उसका काम कर ही लेते हैं। चलो ऐड वाला, तो ऐड वाला में काम करना क्या था हम लोगों को ना, हम लोगों को ऐड का काम करना था यहाँ पे। तो गाइज नाउ वी हैव लिस्टेड द कंपोनेंट, वी हैव एडेड द डिस्प्ले। नाउ वी आर नीड टू create a directory. We do not create a directory, guys. Okay, so we need to apply this. तो गाइज ये फोल्डर मत बनाना, ठीक है, क्योंकि कंपोनेंट जब बनाते हो फोल्डर अपने आप बन जाती है। सीधा याद रखना रूट में बैठ के मारना पड़ेगा, नहीं तो माल आएगा नहीं। Ctrl+C आ जाओ, Ctrl+V मारो, तो ये बंदा फिर रोते हुए बनाएगा। बना दिया कुछ भी, तो भाई क्या करना है, इसके अंदर वो यूजर को डालो, फिर एरर डिबगिंग करना पड़ेगा। अब देखो गो टू यूजर करके एक लिखा है जिसमें करके इसमें जा रहा है, मतलब यहां से फिर वो नेविगेट कर रहा है। तो भाई आ जाओ, क्लोज कर लो ना सारे चीज जो हो गया है, खत्म, क्लियर कर लो स्क्रीन को। नाउ गो देयर एंड नाउ गो टू योर यूजर फॉर्म। ये बंदा आपने बनाया अभी, तो आ जाओ फिर इसका TS में सारे को उड़ा दो, उड़ा के डालो, करो, देखो फिर कहीं गलती क्या हो रहा है। अच्छा देखो, एक ये जगह में आपका पहले भी हम लोगों ने ठीक किया था ना, तो व्हाट आई शुड डू, आई शुड कॉपी फ्रॉम देयर एंड सिंपली पुट दीज टू लाइंस देयर सो दैट आई अवॉइड द एरर इंस्टेंटेनियसली। तो ये दोनों जगह पे हम लोगों को एरर मिल रहा था, तो डाल दो साले को बस, और इसको बंद कर दो, खत्म, क्लियर हो गया दोनों एरर। नीचे चलते हैं फिर और कहीं देखते हैं कहीं रुका हुआ है कि नहीं कहानी। तो क्या कर रहा है ये लोग, कंस्ट्रक्टर बना रहा है राउटर। राउटर तो ऑलरेडी यू नो दैट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन रहा है, ऑन सबमिट कर रहा है और इसमें नेविगेट करके इसमें भेज रहा है। तो ये हो गया हम लोगों का। एक चीज हमको वो लग रहा है कि हम लोगों ने व्हाट वी हैव डन इन केस ऑफ, व्हाट वी हैव डन इन केस ऑफ नेविगेशन। नेविगेशन के लिए हम लोगों ने क्या किया, एक तो वी नीड टू राइट ऑल द मॉड्यूल्स। तो देखो भाई यूजर लिस्ट कंपोनेंट, फॉर्म कंपोनेंट दोनों हमने मॉड्यूल में लिख रखा है। ओके, तो लेट अस सी नाउ क्रॉस चेक। अच्छा डिस्प्ले पार्ट तो हुआ नहीं, तो डिस्प्ले पार्ट के लिए हम लोगों का ये पार्ट आ जाएगा। कहाँ जाएगा ये, HTML में जाएगा। यूजर फॉर्म का जो HTML है, मतलब यूजर फॉर्म का मतलब इसको खोलो, इसका HTML, ये बंदा इसका HTML है, इसको उड़ा दो, डाल दो। HTML में तो कुछ रखा नहीं है, तो लेकिन फिर भी रखा गया है, 7 एरर खा गया है। लो, क्यों 7 एरर खा गया है, क्योंकि एनजी मॉडल नहीं मिल रहा है। एनजी मॉडल नहीं मिल रहा है मतलब के हम लोगों को एक यहाँ पे चेक करना पड़ेगा, बिकॉज एनजी मॉडल टू इम्प्लीमेंट वी नीड टू स्विच ऑन द एनजी फॉर्म, and to make the two-way binding ng form we need to come here and then app module। yes, ये देखो असली जगह। तो भैया इसमें हमको क्या करना है, देखो काफी सारी चीजें यहाँ पे इनकम्प्लीट है, इसको ठीक करना पड़ेगा। यूजर फॉर्म को बंद कर, सारी चीज जो यूज हो गया ना इसको रहने दो, ये बंद कर दो, ये सही है। तो यहाँ पे देखो ये झाड़ हो गया, तो यहाँ आ जाओ, कहाँ जाएंगे हम लोग जाएंगे ऐप मॉड्यूल डॉट टीएस। इसमें देखो क्या है ना, ऐप मॉड्यूल डॉट टीएस में इंपोर्ट्स के जगह में 4, 1, 2, 3, 4 होने चाहिए, है ना, लेकिन हम लोगों का कितने हैं, हम लोगों का है 3, तो भाई हम लोगों का एक कोई कमी है, तो ये चौथा वाला लेके आ गया HTTP क्लाइंट मॉड्यूल। तो HTTP क्लाइंट मॉड्यूल ऐसा करते हैं, बंदे को पूरा कॉपी कर लेते हैं ऊपर से, सबसे अच्छा ही होगा बस। तो भाई
अच्छा, यूजर सर्विस रुका हुआ है, तो यूजर सर्विस हम लोग क्या करते हैं, लेट अस टेक इट फ्रॉम आवर ऑलरेडी वी हैव रिटन द टीएस फाइल, यू कैन टेक इट दैट यूजर सर्विस इंपोर्ट लाइन, क्योंकि ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो फिर से कौन ढूंढेगा। तो आ जाओ यहाँ पे, इसको हटा के उसको डालो। बाप रे बाप, बिना हराम हो गया। चलो यहाँ तक तो लुक रहा है सब कुछ ठीक ठाक। अच्छा, इंपोर्ट, आप एक फंडा और बाकी है। कौन सा बाकी है? राउटिंग। राउटिंग कहाँ पे हो रहा है? राउटिंग हो रहा है ऐप राउटिंग मॉड्यूल में। देखो ये बंदा खाली पड़ा है, मतलब राउटिंग का कुछ है ही नहीं, तो कुछ नहीं होगा। तो आ जाओ फिर, राउटिंग का कोड कहाँ लिखा है उसको निकालो। ये देखो, ऐप राउटिंग मॉड्यूल मारो, साले को कॉपी मारो। तो ये हो गया आपका ऐप राउटिंग मॉड्यूल। इसको उठाओ, इसको लगाओ, इसको उड़ाओ, इसको डालो। तो ये डाला हमने, देखो ये सारा कंपोनेंट इंपोर्ट हो गया। यूजर लिस्ट, यूजर, हम लोग का दो कंपोनेंट था, तो दोनों बन गए। पता नहीं चलेगा कि नहीं चलेगा, बना तो दिया है बहुत कुछ। ठीक है, तो एक बार चेक करते हैं हमारा ऐप मॉड्यूल टीएस में। ऐप मॉड्यूल टीएस में सारे मॉड्यूल डाल रखे हैं क्या? नहीं, एक्चुअली हम लोगों ने इसका कॉपी नहीं किया था, तो ऐप मॉड्यूल टीएस में चल के ऐप मॉड्यूल को भी डाल लेते हैं ढंग से। यस सर, सही तो था, लेकिन ये लाइन हम लोगों को फिर से ले आना पड़ेगा, तो चक्कर नहीं है कुछ। कौन सा? नहीं, ये लाइन। अच्छा, ये लाइन लेने के लिए वी कैन गो टू द फॉर्म कंपोनेंट डॉट टीएस एंड देन वी कैन सिंपली copy, and then we can come to the area of problem. This is the problem, and this. Yes, hopefully we have taken all. So let's cross check again. So extension 1 requires reload. कौन सा बंदा reload होना चाहता है भाई? सोनार लिंट। चलो reload करवा देते हैं। Okay, so let's come back. It is reloading. So now close all. Cancel all. Now come and check. तो गाइज लेट अस क्लोज ऑल यूजर फॉर्म। हम लोगों ने, ये बंदा था, बंद कर दो। यूजर लिस्ट, ये बंदा बंद कर दो। तो यूजर लिस्ट बंद हो गया। फिर आ जाओ, फिर एसेट्स वगैरह तो है अलग से, ये छोड़ दो। चलो फिर चला के देखते हैं क्या कहानी गाता है ये मॉडल बंद कर दो। ये सर्विस हमने लिखा था, तो सर्विस में भाई लोग हम लोगों ने ये लिखे थे। अच्छा, पोर्ट नंबर ध्यान से लिखो। तो जो हमारा मेन यूआरएल है, जो पीछे स्प्रिंग बूट हम लोगों का चल रहा है, पीछे स्प्रिंग बूट इज रनिंग। तो भाई हम लोग स्प्रिंग बूट चल रहा है, उसका प्रूफ क्या है ना? वी आर एबल टू गेट दिस डेटा। रिफ्रेश करके चेक करते हैं चल रहा है कि नहीं चल रहा है। लग रहा है नहीं चल रहा है, घूमे घूमे ही जा रहा है। क्या चल रहा है क्या? आई डोंट नो। विंडोज डिफेंडर अलाउ वेला ओपन जेडी के पता नहीं कहां से आ गया। Anyway, so let us stop it, and I think it's running. So what I should do? Yeah, it's running now, not a issue. Even to cross check, हम लोग इसको ब्राउजर, चलो ब्राउजर चेंज करने की जरूरत है नहीं, चल रहा है। देखेंगे आगे, सोचेंगे अगर नहीं चलता है तो let us come here and then ng, then right here ng serve, that means -o। चलो एंटर मारो। ओ, देखते हैं क्या होता है। 5:30 बज गया यार, दिमाग खराब हो रहा है। चलो लेकिन ये अजीब किस्म का फालतू का लुक कैसे आ रहा है? डेटा तो आ रहा है। लो, चल तो रहा है बिल्कुल, बट द डिजाइन ऑफ द पेज इज एट ऑल वर्स्ट।
So I think we are missing something. Let me cross check this. Design में थोड़ा सा issue है. So guys, let us go to the top. अच्छा ये तो REST controller चल रहा है, connectivity हो गया, it's quite okay, but we should get the Angular application entry point. App root. या यहाँ तक तुम लोगों ने तो सही किया था, पता नहीं डिस्प्ले में क्या हो. What we have done that index.html, we have written this. I think Bootstrap 4 is not working. See here, list user, add user. If I run it again, refresh करो तो आया. लो, ब्राउजर का प्रॉब्लम है, हम क्या करें. ये देखो कितना सही है. So guys, this is okay? Yes, sir. See. So we are using bootstrapping and only two facilities. These are the two buttons we are using: list user and add user. Okay. So when you are seeing that, and you can see this is same page application, you are using only one application. Now what I will do, I'll load it in completely in your GitHub and I'll share you. Spring Boot project is already, you can do it now. I'm also sharing the, the material and also the GitHub link to all of you. Front end, let us create a public repository of front end and then publish to GitHub. So open on GitHub. Got it. Now let's copy. Whom should I give? Chat box में दे दे. Yes, sir. So everybody can have that. लो, तो ये चला गया, लेकिन ये हो गया. और क्या करें, स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट भी दे दे, मतलब जो बनाया मैंने, है ना. तो ये तो आपको रहना चाहिए, नहीं तो कनेक्ट नहीं कर पाओगे दोनों फ्रंट एंड एंड बैक एंड. सो यू शुड ट्राई एंड एक्सपेरिमेंट योर ओन प्रोजेक्ट ऑन दिस. So Spring Boot Angular backend, let's create a WinRAR. Okay, so now the question is, how should I give this? I cannot attach here. So let me मोनालिसा को दे देते हैं, क्यों? ठीक रहेगा. You can take it from ma'am. So let me give it from the desktop. उससे ले लो एक बार पूछ के. तो स्प्रिंग एंगुलर बैकएंड नहीं, ये तो नहीं. यहाँ से कहाँ से? Sir, you can also upload it in the GitHub, sir. अभी टाइम नहीं है भाई उतना. तो मैं क्या करता हूँ ना, आपको ये पकड़ के दे देता हूँ, सारा दे देता हूँ उनको. मैम से एक बार पूछ के ले लो. ठीक है, चलो टाटा बाय बाय देन गाइस. Bye, sir. Thank you, sir. Bye, sir. बाय. Yes, sir.